IJCTO की आयोजन समिति के सेक्रेटरी और कोर्स डायरेक्टर्स इंडो जापानी CTO क्लब के 8वीं लाइव समिट का आयोजन कर रहे हैं। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 19 अगस्त 2022 से शुरू होगा और लीला एम्बिशियस होटल गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन श्री अनिल विज, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा 19 अगस्त को शाम 5 बजे किया जाएगा। एक सम्मेलन के रूप में IJCTO क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन CTO हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली आर्टरीज में 100% ब्लॉक वाले रोगी के क्षेत्र में सभी विकासों को शामिल करने के लिए लगातार सफल रहा है। पहले इन मरीजों का इलाज सिर्फ हार्ट सर्जरी से होता था, लेकिन अब एंजियोप्लास्टी से भी इन मरीजों का इलाज किया जा सकता है। IJCTO सम्मेलन के पिछले 7 संस्करणों में नए हृदय रोग विशेषज्ञ को CTO केसेस ऑपरेट के लिए आवश्यक बारीक जानकारी, स्किल और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। फेलो और युवा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक फेलो कोर्स होगा। 19 अगस्त होने वाले फेलो कोर्स के लिए कम से कम 300 कार्डियोलॉजिस्ट के शामिल होने की उम्मीद है। मौजूदा प्रोफेशनल्स और मेंबर्स के अलावा 3 दिवसीय कार्यक्रम नए युवा फेलो और एस्पायरिंग युवा हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए अहम होगा। मेडिट्रीना अस्पताल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर N प्रताप कुमार ने कहा, इवेंट मेडिसिन के क्षेत्र में नए अवसर को बातचीत करने और नए अवसरों को अनलॉक करने के साथ साथ मौजूदा गैप्स को दूर करने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करेगा। इस मीटिंग की अध्यक्षता हैदराबाद के कोर्स डायरेक्टर्स डॉक्टर सूर्य प्रकाश राव, मुंबई के डॉक्टर गणेश कुमार और लखनऊ के डॉक्टर PK गोयल के अलावा केरल के डॉक्टर प्रताप कुमार ने की। Ambience Gurugram, which is actually done by nearly 350 cardiologists attend the meeting. It is basically to train and exchange knowledge between among cardiologists from India, across India, also from other parts of the world. We will have 14 live cases showing during this time, which will be shown in the auditorium from different parts of the world. The live cases are coming from 2 centers from Japan, 1 from Italy, 1 from Egypt, 1 from Canada, then other cases are coming from BK Hospital Faridabad as well as Sector 10 Civil Hospital Gurugram. This is actually regarding 100% blockage in heart vessels which supplies the muscles. Earlier, when there is a 100% block happens in any blood vessels, they go for bypass surgery. Now this is actually turning out. People with excellent skills, training and good materials available, we can actually send this patient for angioplasty. So this is actually to train people not only in India, all over the world. Many people are even coming from Nepal, Maldives, Sri Lanka, like that, all the countries nearby. Many people would have come more only because of the COVID and the issues of fear, people are not coming. Otherwise, nearly 350 cardiologists and nearly 400 attendees will be there in the meeting. Not only from Delhi, all over India it is coming, also from other countries. And basically to train, and this is actually it's happening. The people coming from the major operators are Dr. Kenji Kawajari from Japan, Dr. Nagamatsu from Japan, Dr. Kenya Nasu and Hamasaki from Japan. These are all big operators in Japan. Then Gerald Werner from Germany, then Galassi from Italy, Dr. Sanju Kalra from Canada, and these are and Khalid Tamam from Egypt are the operators. From here, it is done by IJCTO. I am the course director and the organizing secretary. My name is Dr. Pratap Kumar, and also other 3 course directors are there. Dr. Surya Prakash Rao from Hyderabad, Dr. V.V. Ganesh Kumar from Mumbai, and Dr. PK Goyal from Lucknow. These are the 4 course directors doing this meeting. I think Dr. Gunjan also can explain. जैसा कि सर ने बताया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे IJCTO कॉन्फ्रेंस हो रही है होटल लीला गुरुग्राम में। एक इंडो जापानीज
सीटीओ कॉन्फ्रेंस है। सीटीओ का मतलब होता है जिसमें 100% नस जो दिल की है उसको बंद होती है, उसको हम एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोलना। तो इट इज़ इंडो जापनीज। इसमें बेसिकली जो नॉलेज टेक्नोलॉजी वो इंडो जापनीज़ में ट्रांसफ़र होती है, वो एक दूसरे को सिखाते हैं। उसके अलावा वो ये एक लाइव कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम इस बार हम टोटल 14 केसेस कर रहे हैं, जो कि इंडिया के अलावा बाकी दुनिया में भी लाइव टेलीकास्ट होंगे। जापान, तो जापान में है, इटली, जर्मनी, ये सब जगह टेलीकास्ट होंगे। इसमें जापानीज़ के अलावा हमारे पास जो इंटरनेशनल फैकल्टी आ रही है उसमें डॉक्टर जेराल्ड वर्नर हैं, डॉक्टर ग्लासी हैं, डॉक्टर खालिद इमाम फ्रॉम इजिप्ट। ऑल दीज आर पीपल आर कमिंग एंड डूइंग द लाइव केसेस इन इंडिया। ये सब लाइव केसेस करेंगे इंडिया में, इटली में एंड कीनिया में। सो एक ये अपने में एक अलग ही कॉन्फ्रेंस है। जो पहले नसें जो 100% होती थी, बेसिकली एक टाइम होता था जब हम कहते थे 100% नस बंद है, इसको बाईपास के लिए रेफ़र कर दिया जाए, या उसको खोलो ना, या उसको दवाइयों पे रखो। अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस है जो हमारे को आगे जो यंग कार्डियोलॉजिस्ट है उनको बताती है, सिखाती है कि इसको कैसे खोला जा सकता है, क्या टेक्नोलॉजी आगे एडवांसमेंट आ गई है जो हम कर सकते हैं। तो जैसा सर ने बताया, ये सर उस कॉन्फ्रेंस के खुद एक कोर्स डायरेक्टर हैं। तो ये एट्थ ईयर में अपना एंटर कर रही है। ये दिल्ली में फर्स्ट टाइम हो रही है, करेक्ट सर? या दिल्ली में फर्स्ट टाइम है। यूजुअली इट इज हैपनिंग इन मुंबई, Hyderabad and Kerala. This is actually this 8th conference. Actually, it is supposed to be the 10th conference. Last year and the before 2 years, 20th and 21st, it has not happened because of the corona. तो इसमें तकरीबन 550 कार्डियोलॉजिस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल शामिल होंगे। सबसे इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें जो केसेस लाइव केसेस है, जो इंडिया से लाइव केसेस हो रहे हैं, जो हमारे दिल्ली रीजन से लाइव केसेस हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाइव केसेस हो रहे हैं। पहले बार होता है, पहली बार हो रहा है ये कि हमारे इंडिया में कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाइव केसेस टेलीकास्ट होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम के लिए। तो ये 2 सेंटर्स हैं, एक है ये फरीदाबाद का सिविल हॉस्पिटल और दूसरा है गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल। तकरीबन 7 केसेस जो प्लान्ड है लाइव टेलीकास्ट के लिए इन 2 सेंटर्स में। बाकी 7 इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो ये एक अनोखी पहल है, अनोखी बात है पहली कि ये हम ऐसा हो रहा है पहली बार इंडिया में। Actually, we want to just inform these things to you, to the media, as well as to tell this is possible for the people, even with a 100% block, they can actually undergo angioplasty. Earlier, 100% block means even in one vessel there is a 100%, they will only go for a treatment called bypass surgery. Now, the technology is improved in such a level that most of the things can be tackled by simple intervention, that is angioplasty. So they can go home next day morning house. तो जैसे बता रहे हैं कि पहले हार्ट सर्जरी के माध्यम से होता था इसका इलाज, अब तक कितने लोगों को आप इस जरिए ठीक करते हैं? मैं अकेला तो इंडिया में तो मैक्सिमम सीटीओ एंजियोप्लास्टी करने वाला डॉक्टर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस थे 1400 एंजियोप्लास्टी ऐसा 100% सीटीओ का 100% किया था। इसकी लगभग कौन सी हार्ट सर्जरी काफ़ी हाई लेवल की कॉस्टिंग जाती है, इसकी कॉस्टिंग लगभग कितनी जाती है? लेकिन हार्ट सर्जरी तो कॉस्ट इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस वेयर यू आर, नंबर 1. Number 2, where you are doing. Cost depends upon many things. Not only the technology is where you go and do the case, also the cost goes up. Which doctor doing, also the cost goes up. This also, I cannot just make a comment that what is the cost. Cost depends upon many factors. लगभग डिफरेंट 50% का रेशियो है। Actually, in BK hospital we do angioplasty at a cost of 55,000 to 1,20,000, depends upon the complexity of the case. And in the same thing, in some other private hospital, the same angioplasty cost nearly 2.5 to 3 lakhs. So this depends upon the lot of things, If you drive in a Maruti car, you drive in a Benz car, there is a difference. And even if you give the every facility in a Maruti car, from outside you will feel that Benz is better. So I can't tell that. So those comments actually I wanted to avoid, सर इसमें आपको राज्य सरकार सपोर्ट कर रही है या कौन कर रहा है, और जो आप No, it is actually जो प्राइवेट में ऑपरेशन होता है उसकी कॉस्ट कितनी है और सरकार में कितनी होती है, ये जरा बताएं।
No, it's a comment I don't want to make. Normally, there is a government scheme called Ayushman Bharat in one side, central government health scheme is another side, and the third, actually the private party. So, what is my rate for doing a plumbing? A plumber can decide. That is actually the Supreme Court verdict. When you write an article in a paper, you can charge, depends upon what you think you are, what is your capacity. So how can I tell that? Number one. Number two, I can write an article for 10 rupees, I can write an article for 10,000 rupees. I can make a film for 10 crore, I can make a film for 10 lakhs. So that is actually one side of the game. Second thing is actually what facility you provide. You come to a hospital where the room is fully air conditioned, your relative is getting a TV and a fridge separate, and your bathroom is separate, your care is separate. That is actually all depends upon what care you get. You only go for treatment, the cost can range from 70,000 rupees to 5 lakhs, depends upon the complexity of the case. In a 100% block case, naturally the complexity goes up. When you have a normal angioplasty requires one guide wire and one balloon and a stent. In a 100% block, you may require 10 wires, 9 wires, 5 wires. Then multiple balloons are required. If there is a calcium block is there, you have to take a rotablation to remove the calcium. When you have a block is actually so significant, you have to do imaging. Imaging means you have to go inside the blood vessel and see how the block is there. So those things are actually matters, and the cost can go up.